This is a very unique story, and I think a movie can be written on this because something really strange happened with both of us. रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 The story of mine is completely different. हे शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई. So it started almost 8 months before when I got a one profile in my blog list of a shadi.com and it was like Sonam Sheth. हे शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई. When I created my Shadika profile, there was a occupation and where by mistake I had written physiotherapist. So when I got her profile as a requested, so I asked her first, are you looking for physiotherapist or someone who is in pharmacy? Then I am not that candidate because I have done my masters in engineering, and from that moment we started talking. के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई. रास रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा आछा टमटमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर खाए हयू हाय 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 हाय. हाँ मजा है जिंदगी नशा है जिंदगी धीरे धीरे चढ़ेगी. हाँ दुआ दे जिंदगी बता दे जिंदगी बात अपनी बनेगी. हाँ ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है. अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई. It was pretty weird that we don't even know each other, but all of a sudden we became so free with each other, sharing everything what's happened in our life. शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी. Since it's India and US coming up, it's always difficult to communicate because once her night is my morning and my morning is her night. अपनी बनेगी. हाँ ख्वाबों के बीज कच्ची जमीन पे हमको बोना है आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना है. अपना बोझा मिल के साथ ही हमको ढोना है शहनाई शहनाई शहनाई. It was really very reluctant for both of us to just how to go ahead with this. My son phoned me, Dad, there's a one girl in the Ghatkopar. You better try to contact him. की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई. रचिलो साज सजिलो शुभ घड़ी छे आवी आछा I said on the first time, she is perfect for our family.
संग संग में संग आएगी संग रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगा तू रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगा संग रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खेल जाएगा My parents liked her a lot, and I have never seen her. So, there was always a one consciousness, how she would be look in person when I meet her, whether this will go good or not. रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग Then we talked to Sonal's mummy papa. So she said, if you don't have any problem, I will go to USA. The moment she decided, that I want to come to US to meet you, from that day I was so conscious and I was so tense. I went to US for 5 days and I met him. Those were the really best days, I can say. थोड़ा सा ये अंग खिल जाए मस्ती भरा मन मुस्काए हंसते हंसते हम खो जाए यादों को हम संभाले बातों को हम न भूले यादों को हम संभाले बातों को हम न भूले रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगा तू रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगा तू संग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तू रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खिल जाएगा रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खिल जाएगा रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खिल जाएगा रंग संग मेरा मिल जाएगा अंग अंग तेरा खिल जाएगा रंग 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 मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग रंग रंग मेरे रंग रंग में रंग जाएगी तो रंग संग संग मेरे संग संग में संग आएगी संग The best part what I liked her is she's full of positive vibes. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते Kashyap is a very adorable boy. हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा कभी भी आप उससे बात करो, you feel you are completely in her world. She will make you feel very special. क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा I think it's very difficult from a Gujarati family when a girl comes to US just to meet a guy for 5 days. Generally, as a guy, I need to be in India to meet her, or I need to go with my family to meet her. But this is a completely different way of approach. They complement each other. They're quite different. So, like it says, right? That Yes, Sonam is opposite really attracts.
quite kind of. Simple, I won't say her sober. an introvert. She's very expressive, but she's more calm as compared to Kashyap. Kashyap is more of a Gentle, like friendly, over friendly, or I mean, is a guy who mixes with everybody really quick. He never breaks. but he's a very relationship. sensitive, very innocent, you know. I mean, जान दे देगा अगर कुछ भी तुम बोलो उसको, रात को जान उठ दे के आ देगा। जाएगा, जान ही देगा वो मेरा भाई। तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। Hi Kashyap, hi Sweetubin. Hi Sweetubin, hi Kashyap. So all the best for a new life. Enjoy your life. તમે હવે US જશો, અમે તમને 15 બહુ દિવસ મિસ પછી કરશું. બહુ મિસ કરશું. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम। It really makes me feel very proud and very good to see my best friend getting married to a wonderful person like Sonam. So I wish you both a very, very, very happy married life. Congratulations once again. मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। This one is for the तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। मुझे लगा at last my dream is success today now. तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला। અને પછી તરત જ આવીને એમને કીધું કે નહીં, કશ્યપ ઇઝ વેરી ગુડ અને મને એમની સાથે ફાવશે. मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। Basically, that's the story of how our relationship began, and now it has turned into marriage. चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया,
चुन लिया मैंने सुन लिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार तू ही बता। दोनों मिले रात बने रोज यही मांगू दुआ, तेरी मेरी बात बने बात बने। मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, तुम एक मुसाफिर हो मैं कोई राह अनजानी, मन चाह मोड़ दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट का पानी। नचले नचले जरा नचले नचले छत पे बुला के नचले। झनक झनक झनक
Today is the wedding day, and you won't believe that before 15 days of marriage, my parents saw him. Honestly, we are very different person. Like, we are extreme opposite. I'm a very emotional guy and she is completely practical. I think I'm more conscious right now because since I'm starting a new life, so I don't know what to say, but hopefully all goes well and cross my finger and I have a very good life with whom I met I think 1 year before, and I just want that the function goes well and ऐश करे, शादी जैसा लगे और बारात में नाच के एकदम सुपर फंक्शन हो. Sometimes he behaves like a kid, he becomes too irritated, he wants things to happen according to him only. जब भी आप उसके साथ हो तो थोड़ा किट चलता रहता है, ऐसे बात कर, ये कर, वो कर. Somehow, chemistry wise, I think that we both love each other a lot and we both can do anything for each other. जीवन साथी
I think I'm very, very lucky to have her in my life because she is very, very cute. She is very nice. She is very sweet. And most important, she loves me to the core. Yeah, he is the only person, you know, I think he loves me and he'll take care of me. I'm super 100% confident. That's why I said the marriage have become it's like a destiny, you know, कि ऊपर वाले ने लिखा रहेगा आपके तकदीर में and you get it. ભગવાન એમને સુખી રાખે આનંદમાં રાખે અને આયુષ્માન થાય એ જ પ્રાર્થના કરું છું ને પરદેશ રહી સુખી રહે. My parents were looking for me from past 2-3 years, you know, कि लड़का बड़ा हो गया है, US सेटल हो गया है. Only the one condition was the girl should be very well educated and who can take care of my son. My blessing to my boy that he should have everything in the life, whatever he wants, and I wish that he should be never unhappy in his life. May God bless him and give him lot of pleasure in his life. अपने घर में हिल मिल जाए, सबके साथ रहे, सबसे ज़्यादा तो वो कश्यप के साथ अच्छे से रहे, वो ही सोचती. बेटे के लिए माँ का सपना वही होता है कि एक अच्छा लड़का मिल जावे, एक अच्छा घर मिल जावे, बेटी उसके घर में सुखी रहे बस. तो आज मेरा पूरा हो गया सपना. I was really scared that what's going to happen now next, because it's completely two different families, and for any girl to leave her own family and enter into a new family, it's a really scary big step. It's not scary, but it's a really different change of life. मैंने और मेरे भतीजी ने सबसे पहले वही डिसाइड किया कि शी इज द परफेक्ट फॉर माय सन. उसको संभाल लेगी, शांत थी, अपने घर में हिल मिल जाएगी. She should give the best happiness to my son. God bless him. Congratulations to both of you. And yeah, we'd like to congratulate the newlyweds and wish them luck, love and laughter. During the Vidai, it was like, of course, you are leaving your family. It was like, you know, that tomorrow I'm not going to see my own room. Tomorrow I'm not going to see my own wardrobe. My mom, my dad, my brother, my bhabhi, no one is going to be around me. So it was like really heart touching for me to. Of course, we are going to be together only. There's nothing, no doubt on that we are going to be apart. But still, you know, a physical appearance does matter a lot. And in Vidai, I was just feeling that they're just going away now. Like a physical appearance will decrease day by day. बेटी आई है
तो पढ़ाई होने ही वाली थी। वो एक दिमाग में है कि नहीं, उसको भेजने का तो है ही। कोई भी बेटी माँ के घर पूरा समय रह नहीं सकती है। My mom has been like my, you can say, a shadow for me, where she's always covered me, where she has always given me all guidance wherever required, and she's been the best mother. And regarding my dad, I'm like my dad's daughter, you can say, like really a daddy's girl. કે હવે ઘરની અંદર એ જે ચૂલબુલ કરી કે આમ જેમ જે બોલવાનું એની જે હતું એ હવે કઈ રીતે અમે થોડો લાગશે અમને ટાઈમ એ સહન કરતા, પણ બાકી તો અમે એને મિસ તો કરશું જ એમને. હું મારી દીકરીને મિસ કરીશ એટલું કોઈ નહીં કરી શકે. મારી લાઈફમાં એનું એટલું બધું મહત્ત્વ છે ને કે વાત ન પૂછો. એના આવ્યા પછી અમારી લાઈફમાં એના પગલાં થયા પછી અમારા માટે બહુ જ સારા દિવસો હતા. અમે એને હસબન્ડ વાઈફ બંને બહુ જ મિસ કરશું, જેની કોઈ સીમા નથી. I'm really going to miss my parents a lot because I don't know, I mean, I'm really attached to my mom and dad, and of course my brother also, and my brother has been a support for me always. लगन लागे रे तो से प्यार बलम केसरी, तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी, तो से लागी रे जी में से बसे जादू सा क्या कर दिया है मोगरे फूल से मैं खिली लम्हा हर पल जुड़ा तुमसे ही रंगीनिया है सौंधी सी खुशबुएं महकी सी लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी, तो से लागी रे जगी नैनों में नींद ना अभी तुमसे जो मिली उमंग अति जागी है साथ जो तेरा है सांवरे ढोला रे रण सवेरा है सांवरे I'm very lucky to have you in my life and always be with me, never leave me, support me, and I'm always there for you forever. I just want to say I love you to the core, and I would be always with you. Wherever you would be, I will keep you happy. बलम केसरी तो से लागी रे